अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से मैं 3 स्टोरीज़ आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो वही जो मेरा कंसर्न रहा है शुरू से कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ख़ास तौर पे फाइज़र ने ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम किया है, सबसे बड़ा फ्रॉड किया है किसी कंपनी की तरफ से। गवर्नमेंट्स की तरफ से तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी स्कैम है, फ्रॉडिस्ट है, जिसने पूरी दुनिया में लूट मार का अंबार लगाया हुआ है और 100 से ज़्यादा मुल्कों में अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री में इंटरफियरेंस की है। इस पे मैं आगे आता हूँ। पहले मैं आपको फाइज़र के हवाले से बताऊँ। आपको पता ही है कि इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और लोग गए हैं। हमारे पाकिस्तान के बचुंगड़ा जो है लिया बिलावल, वो भी गया हुआ है एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेके। डेवोस स्विट्ज़रलैंड के सबसे महंगे होटल में अपने डेलीगेशन के साथ ठहरा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ खुशगपियाँ कर रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। इसलिए कि गया इसलिए था कि इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इनसे कुछ भीख मांगूंगा, लेकिन अब वो भीख मांगने का भी इनका मुंह नहीं रहा। तो वहाँ पे फाइज़र का CEO आया था, तो वो जैसे ही उतरा, मैं भी डेवोस गया था आज से 3-4 साल पहले, जब इमरान खान वहाँ पे स्पीच करने आया था, तो मैं, हमारी NGO कम्युनिटी ने डिसाइड किया था जिनीवा से कि हम जाएंगे वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम भी गए थे। तो ये फाइज़र कंपनी के CEO की आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ। ये जिन गलियों में घूम रहे हैं ना, तो उसमें हम भी गए थे, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान और गरीब मुल्कों के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं ना, उनकी गाड़ी अंदर कॉन्फ्रेंस के दरवाजे तक जाती है, लेकिन ये गोरों को इस चीज़ की आदत नहीं, तो ये अपनी गाड़ी दूर पार्किंगों में खड़ी करके वॉक करके जा रहे होते हैं। तो 2-4-5 मिनट की वॉक होती है। तो मैं भी उन रोड्स पे काफ़ी घूमा फिरा हूँ, क्योंकि हम बस में गए थे जिनीवा से, तो फिर वहाँ बस दूर पार्किंग मिली थी, तो इन्हीं रोड्स पे हम चल रहे थे। तो फाइज़र के CEO को जर्नलिस्टों ने पकड़ लिया, उससे मुख्तलिफ सवाल किए, उसने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन आप ये सवालात पे गौर करें, ये जो सवालात कर रहे हैं, यही सवालात मैं कितने अरसे से नहीं उठा रहा। आप इसके गवाह हैं कि मैं ये फाइज़र के हवाले से, फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इनके फ्रॉड के हवाले से ये बातें नहीं कर रहा। ये ज़रा सुनने वाली है, खाली 2 मिनट की वीडियो है, आप इसके सवालात सुने। सारे जर्नलिस्ट जो सवालात कर रहे हैं वो सुनने लायक हैं। Mr. Borla, can I ask you, when did you know that the vaccines didn't stop transmission? How long did you know that without saying it publicly? Thank you very much. I'm sorry. Answer that question. I mean, we now know that the vaccines didn't stop transmission, but why did you keep it secret? You said it was 100% effective, then 90%, then 80%, then 70%. But we now know that the vaccines do not stop transmission. Why did you keep that secret? Have a nice day. I won't have a nice day until I know the answer. Why did you keep it a secret that your vaccine did not stop transmission? Is it time to apologise to the world, sir? To give refunds back to the countries that poured all their money into your vaccine that doesn't work, your ineffective vaccine? Yeah, you have a little bit around. Are you not ashamed of what you've done in the last couple of years? Do you have any apologies to the public, sir? Are you proud of it? You've made millions on the backs of people's entire livelihoods. How does that feel, to walk the streets as a millionaire on the backs of the regular person at home in Australia, in England, in Canada? What do you think about on your yacht, sir? What do you think about on your private jet? Are you worried about product liability? Are you worried about myocarditis? What about the sudden deaths? What do you have to say about young men dropping dead of heart attacks every day? Why won't you answer these basic questions? No apologies, sir. Do you think you should be charged criminally for some of the criminal behaviour you've obviously been a part of? How much money have you personally made off the vaccine? How many boosters do you think it'll take for you to be happy enough with your earnings?
Nothing? Who did you meet with here in secret? Will you disclose who you met with? Who did you pay commissions to? In the past, Pfizer has paid $2.3 billion in fines for deceptive marketing. Have you engaged in that same conduct again? Are you under investigation like you were before for your deceptive marketing, sir? If any other product in the world doesn't work as promised, you get a refund. Should you not refund to countries that laid out billions? अजीज दोस्तों, दूसरी स्टोरी है इकोसिस्टम की। आपको याद है ना, कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म थी, उसमें विवेक अग्निहोत्री जी की जो फिल्म थी, उसमें पल्लवी जोशी कहती हैं कि क्या हुआ अगर सरकार आपकी है, सिस्टम तो हमारा है। तो यही है कि चाहे दुनिया में कितनी भी सरकारें हों, कुछ भी हों, सिस्टम तो अमेरिका के हाथ में है। सिस्टम अमेरिका का कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है, और कॉरपोरेट सेक्टर की जो पूरी प्लानिंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है अमेरिकी सरकार। और ये अगली वीडियो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 3 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपके दिमाग की खिड़कियाँ खोल देगा। खिड़कियाँ क्या, दरवाजे भी खोल देगा, दीवारें भी सारी गिरा देगा, बिल्कुल ओपन कर देगा कि कितने अरसे से मैं अमेरिका की इस इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन के बारे में कहता हूँ। ये गोल्डन ग्लोब के उसमें एक जो स्पीच है 3 मिनट की, वो आपको समझा देगी कि कितना बदबूदार अमेरिका का ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में बदमाशियाँ कर रहा है और पूरी दुनिया को इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितने घिनौने काम किए हैं। सुनने लायक है। Get off now, but it'd be remiss of me in reaching the end of this sojourn in Hollywood not to remind you, especially you younger writers, that you can be critical of your government and your society. You don't have to fit in. It's fashionable now to take shots at Republicans and Trump and all that, and avoid the Obamas and Clintons. But remember this. In the 13 wars we've started over the last 30 years, and the $14 trillion we've spent, and the hundreds of thousands of lives that have perished from this earth, remember that it wasn't one leader, but a system, both Republican and Democrat. And call it what you will, the military, industrial, security, money, media, complex. It's a system that has been perpetuated under the guise that these are just wars, justifiable in the name of our flag that flies so proudly over our lives. Our country has become more prosperous for many, but in the name of that wealth, we cannot justify our system as a center for the world's values when we continue to create such war and chaos in the world. Thank you. No need to go through the victims, but we know we've intervened in more than 100 countries with invasions, regime change, economic chaos, or hybrid war, soft power, whatever you want to call it. It's war of some kind. In the end, it has become a system leading to the death of this planet and the extinction of us all. I fought these people who practice war most of my life. It's a tiring game, and mostly you'll get your ass kicked. And with all the criticism and the insults that you'll receive, and the flattery too, it's important to remember, if you believe in what you're saying and you can stay the course, you can make a difference. I urge you to find a way to remain alone with yourself. Listen to your silences, not always in a writer's room. Try to find not what the crowd wants so that you can be successful, but try instead to find the true inner meaning of your life here on earth, and never give up on your heart
in your struggle for peace, decency, and telling the truth. Thank you. और अजीज दोस्तों, एंड पे ये एक साहब हैं अमेरिकन जिन्होंने इस्लाम की पूरी पोल पट्टियाँ खोल दी हैं। ये जो मुसलमान जो पूरी दुनिया के अंदर जाके घुस जाते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, डेवलप वर्ल्ड में, ये वहाँ जाके अपना शरिया लाना चाहते हैं, अपने शरिया को इम्पोज करना चाहते हैं। आप लंदन में आ जाएं तो आपको अक्सर मार्केट के किसी भी मार्केट में बीचों बीच टेबल डाल के कुरान की थप्पियाँ रख के एक पूरी टेंट में, बिल्कुल काले टेंट में औरत होगी बंद बुरके में, एक लंबी दाढ़ी पगड़ी बांधी हुई होगी या टोपी पहनी होगी, अरबी जुब्बा पहना होगा, और लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं और शरिया और काफिरों को मार दो, और ये खुल्लम खुल्ला चीज़ें चल रही होती हैं इधर। लेकिन कभी आपने सुना है कि इन्होंने कभी भी आपने सुना है कि दुबई में ये क्या हो? दुबई में खुलेआम शराब मिलती है, दुबई में बगैर शादी के लड़का लड़की रह सकते हैं, दुबई में कैसीनोज हैं, दुबई में हर चीज़ हो रही है। कभी आपने सुना है कि वहाँ पे तो इतनी दुनिया भर का मुसलमान है? यही आपके पाकिस्तान के 2% के 2 नंबरी कन्वर्टेड मुसलमान, ये इंडिया के 2% के 2 नंबरी कन्वर्टेड मुसलमान, बांग्लादेश के। कभी आपने देखा है कि दुबई में इन्होंने शरिया की डिमांड की हो? दुबई में इन्होंने कभी प्रोटेस्ट किया हो कि ये शराब खाने खुले हुए हैं, ये जिस्म के धंधे हो रहे हैं, ये कसिनोज खुले हुए हैं, ये दुनिया जहाँ की फिल्में उधर बन रही हैं, ये सब क्या हो रहा है एक इस्लामिक देश में? कभी आपने सुना है? इनकी ये 2 नंबरियाँ यहीं चलती हैं क्योंकि यहाँ का सिस्टम इनको एकोमोडेट करता है। भाई जब कोल्ड वार चल रही थी 30s, 20s, 40s, 50s, 60s, 70s, कभी आपने सुना है कि इन्होंने जिहाद की बात की हो दुनिया में? कहीं कभी आप दुनिया का कोई भी मुझे लिटरेचर निकाल कर दिखा दें कि इन्होंने किसी यूरोपियन कंट्री में या अमेरिका में या कहीं और शरीयत की बात की हो? कभी सुना है? ये तो अमेरिका की ज़रूरत थी 79 में कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। इनको एक टेररिस्टों की फ़ौज चाहिए थी। अब ये टेररिस्ट तो नहीं दे सकते थे उनको नाम, कि कैसे कहते कि हम टेररिस्ट भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान में, पूरी दुनिया से जमा करके। दुनिया के 40 मुल्कों के लोग अफ़गानिस्तान में टेररिज्म कर रहे थे उस वक्त। उस टेररिज्म को अमेरिका ने नाम दिया जिहादिज़म, और उस वक्त की सऊदी सरकार ने उसकी फंडिंग की। स्क्रिप्ट प्रोडक्शन अमेरिका की, फंडिंग सऊदी अरब की, और डायरेक्टर पूरी फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहा था ISI। यूं समझ लें कि सिंघम 3 बन रही है। तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी पाकिस्तान, फंडिंग जो फिल्म की प्रोडक्शन के लिए जो फंडिंग जमा की जाती है वो सऊदी अरब, और प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट राइटर अमेरिका। और फिर पूरी दुनिया में जिहादिज़म फैलाया गया, पूरी दुनिया में मदरसे कायम किए। हमने भी मदरसे देखे हैं अपने बचपन में भाई, कम से कम ये तो जिहाद तो कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, गैर मुस्लिम से नफ़रत के मुसलमान सबसे आला अजीम है, मुख्तलिफ है, फलाने ढमकाने, कभी नफ़रत नहीं, कभी जिहाद की बात नहीं की गई थी। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं ये अमेरिका की डायरेक्शन में फिल्में बनी हैं। अब अमेरिका में ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड सब कान बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये जितना बड़ा मॉन्स्टर बनता जा रहा है ना मुसलमान वेस्ट में, वो फिर वेस्ट को खा जाएगा। अजीज़ दोस्तों, इन साहब की ये वीडियो 7 मिनट की है, लेकिन आपको पूरा मतलब अब मुझे यकीन है कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे। इसने इतनी गहरी बातें की हैं, ज़रूर सुनिएगा। और अजीज़ दोस्तों, काइंडली सपोर्ट माय चैनल, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।
So when my colleagues tell me that Islam is a religion of peace, I tell them that Islam is a religion of pieces. Piece of body here, piece of body there. Now, this panel is about radical Islam. I would take the word radical out of the equation. The problem is Islam. As you can hear, I'm not from Florida. I'm from Belgium, like Dr. Evil. That's from Belgium. I've been living here for 13 years. In 1990, according to the CIA World Factbook, in 1990, there were 29 million Islamic immigrants in Europe. That was 23 years ago. Today, it's almost 55 million. One of the duties of Islam is to conquer foreign land, whether it's through jihad or stealth jihad, what we call civilization jihad. The duty of a true Muslim is to conquer foreign land, to establish a caliphate. A caliphate is a grand Islamic state. So the whole world should become Muslim, and all countries will impose Sharia. And Sharia is a totalitarian lifestyle. It's going to tell you how to dress, the way you talk, the way you walk. Women have fewer rights. They have Sharia in my country. It's not in the Constitution, but it's in the schools. They have no-go zones. In Brussels, Belgium, they have no-go zones. A no-go zone is a zone that is occupied by Muslims where even the police are afraid to go. And during Ramadan, the police cannot be spotted eating a sandwich. It's too offensive. So do you get the big picture? Muslims are telling us what to do. I think that prevention is better than cure, and we don't want that in the United States. Now, you've heard of the Cathedral of Cologne. Who knows what I'm talking about, the Cathedral of Cologne? They're building a mosque right next to it that says twice as large and twice as big, next to the Cathedral of Cologne. In England, they have 87 Sharia courts, headed by an Islamic judge, which means that the husband can beat his wife. In the United States, we have no Sharia courts, not yet, unless we take action. There is a movement called ALAC, American Laws for American Courts, and it's a movement that opposes Sharia. Now, it doesn't say Sharia in its bill, it says foreign laws, no foreign laws. Now, the state of Oklahoma made a mistake. They wanted to oppose Sharia, and they said no Sharia law. They were sued by the Supreme Court. So, if I were to give you solutions as to what we can do, is basically to have no foreign laws, right? The place to take it is to the local level. The White House has been infiltrated by the Muslim Brotherhood, so the White House is not the way to go. The place to go is to go to the local people. Before 9/11, there were 1,200 mosques in the United States. Today it's 2,200. This is no coincidence. Even though they killed 3,000 people on that fateful day, they will continue invading our country. Frank, like you said, in our country, it's not so much a wolf, it's a wolf in sheep's clothing. What we call stealth jihad. Infiltrating our education, infiltrating our cultural system, imposing political correctness and hate crime bills. If they can do it in Europe, if they can do it in Canada, they can do it here. Speaking of Canada, in 2011, they passed a law forbidding anyone criticizing any religion. So you cannot criticize Christianity, Judaism, Islam. If you do, you will be fined. And if you refuse to pay the fine, you'll go to jail. If they can do it in Canada, if they can do it in Europe, they can do it here. Our First and Second Amendments are our last chances to survive. In academia, rumor has it that most professors are liberals. No. I would say that 70% of faculty are liberal, 25% are conservative, and 5% are conservative and openly conservative. So it's very difficult just to find people who are willing to blow the whistle on the problem and to tell the truth. You know what I tell people? I'm a conservative professor and I love it.
Now, we do have Muslims who are on the fence. The problem is that they're not the problem, but they're not the solution either. A lot of them do not criticize their brothers and sisters who are evil, who are just committing terrorist acts. It's out of fear. In the United States, we do have cultural Muslims, many Muslims who do not want to hurt us. Again, they're not the problem, but they're not the solution either. We are the solution. We are the ones to uphold the principles of our country, to preserve our values. So we are the one to try to be like this church. Just like we have a rise of Islam, we have a demise of Christianity. And this is felt strongly in Europe. In a country like Sweden, in 1900, 90% of the Swedes went to church. Today, it's 3%. In England, where you have the Anglican Church, in 1900, 90% of British went to church. Today, it's 10%. And of course, Muslims are taking over. And the problem is so bad that a country like France, a country like England, must agree to polygamy, because they have so many Muslims. In France, you're looking at 8 million Islamic immigrants, and you have a lot of polygamous families. It's safety by numbers. And they procreate like mushrooms after the rain. And the fertility rate among Muslim families in Europe is 7 to 8 kids. Just like Muslims are having a lot of children and slowly replacing European culture, the average non-Muslim European family has 1.6 children. For a culture to survive, for a culture to be sustained, the fertility rate needs to be 2.1 children per woman in her lifetime. Most European countries do not procreate anymore. They just don't. Spain has a fertility rate of 1.3 children per family. The problem is so bad that the Spanish government is issuing baby checks. How about I give you 2,000 euros so you can have babies? Apparently it's not incentivizing. In the United States, it's 2.5 million Muslims. It's only 0.6% of the population, from the same source, the CIA World Factbook. So how can they